Hello students, I believe that you have practiced sufficient number of problems from the two topics that I have explained in my previous two videos. One was how to find out the integration of the functions which are directly the derivative of some of the functions. And secondly, how to use substitution method to find out integration. Okay. In today's video, I am going to explain some special type of integrals. These integrals will lead you to solve the questions of 4 marks and 6 marks. So these all integrals are going to be very useful for you. So watch the video carefully. So let me start with these special integration of special functions. In this, what I am going to do, let me give you two terms. One is x square and other is a square. Just we need to arrange these two terms together by taking negative sign or positive sign between these two, okay, or by using square root of sign with positive and negative sign between these two terms. So you know very well that in 6 ways we can do this. What are these 6 ways? 2 are in front of you. One is x square minus a square. Other is a square minus x square. Next, you can take plus sign between them. That is, either you can write this as a square plus x square, or you can write it as x square plus a square. It is one and the same thing. So these are the 3 without under root sign. Okay, x square dx upon x square minus a square, dx upon a square minus x square, and the third one is dx upon a square plus x square. Now the other 3 can be obtained by putting square root of sign above these 3. Means square root of x square minus a square, square root of a square minus x square, and the third one is square root of a square plus x square. Okay, and the 7th one I'll show it to you as well. So let us take all these integrals one by one. That how to prove these results that I have written over here. Here I am going to prove these results, but in questions, when the question is there in the exam, then directly we'll use these results. Okay, means we need to keep these results in our mind. But I am telling you the proof as well, because sometimes if you forget the formula, if you are not having this formula in your mind, then you can easily find out. So let me start with number 1. So here is number 1 result. How to prove it? Let me do it. So as you know that x square minus a square is the identity, well-known identity, that is x minus a into x plus a. Okay. So let me start with this. I is equal to, can be written as dx upon x minus a into x plus a. In this form, we are not able to simplify this thing. Okay. Neither we can use direct result, because this is not directly the derivative of any of the function. And secondly, we are also not able to use substitution method. So what to do over here? We need to do some arrangement. And this arrangement is divide and multiply by 2a. So this is 2a upon x minus a into x plus a dx. As I told you in the previous video also, that we should try to expand numerator. न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे तभी हम सेग्रीगेट करके दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर में जो है वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन. अब इसको सेग्रीगेट करने के लिए वी नीड टू डू वन मोर थिंग, और वो क्या है? वी नीड टू एड x and subtract x. What will happen then?
it will be 1 upon 2a integration of, now rearrange this 2a plus x minus x in a way that the terms that are in the denominator वही हमें numerator में terms मिले. So that can be done by taking this x plus a with this x plus a. I am taking x plus 1 of a and taking negative sign common from this. So what will happen? Negative is common. This x will turns to positive and this positive a will turns to negative. So the two terms x minus a and x plus a we have created in the numerator as well. And in denominator there is no change. Now, as we have discussed, let us segregate these two. If we segregate, it is very clear to you now that x plus a upon x minus a into x plus a will give you only 1 upon x minus a, and this segregation will give you 1 upon x plus a. Now the question is, just like you have solved in the first part, and this is simply 1 upon 2a into log x minus a minus log x plus a. Here I am not using any base, it means I am talking about natural log, means log base to e. You can even write ln over here, okay, plus c. So this is the integration that we have done. Now we need to apply certain rules of logarithm, and that is log m minus log n. And you know that it can be written as log m upon n. So using the same, we are getting I is equal to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a modulus of it plus c, and that is the result that we need to prove over here. So it is very simple to prove, just only you need to expand the numerator. So अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपने न्यूमरेटर को ही एक्सपेंड करना है by multiplying, divide, by adding, subtracting and all. So उसके बाद आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और सेग्रीगेशन के बाद जो फंक्शन आपको मिलेगा that will be easily integratable. Okay. Now the second part you need to do yourself, and that is integration of just little changes over here. It is dx upon, yes, a square minus x square. So in the same way you will proceed, and I hope you can do it your own. Now let me take the next identity. Now have a look on these two results. This is dx upon square root of x square minus a square and dx upon x square plus a square. Okay, so what to do over here? Let me show you how to prove these two results. Okay, this is log x plus square root of x square minus a square plus c, and next is log x plus square root of x square plus a square plus c. These two results are same. I have taken previous two results which both were same and their proof was also same, and here I have taken the two results. The proof of these two results is also same. So let me take first one, and second one you need to prove yourself. This is very simple to prove. Okay, just you need to recall the substitution method of differentiation that I told you that when we are having the terms of like x square minus 1, okay, and we need to substitute something. So what would you prefer to substitute over here? As I told you, we will substitute x as a trigonometric function which give us any identity. So यहाँ पर हम देखें तो x square minus 1 से हमें identity मिलेगी अगर हम x को either sec theta put करें या x को cosecant theta put करें. Okay, so the same यहाँ पर है x square minus a square. अब x square minus a square है तो we need to put x as a sec theta. Why? Because हमें ये a square को भी we need to remove. Okay, so let us put x is equal to a
sec theta. Now we need to remove dx as well, बिकॉज ऐसा तो नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूशन में. आपने देखा है कि आधा फंक्शन x में और आधा किसी और वेरिएबल में मीन्स उसी के रेस्पेक्ट में होगा, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा. सो वी नीड टू चेंज x एज वेल. सो टेकिंग डिफरेंशिएशन, dx इज इक्वल टू a sec theta into tan theta. Okay, now put these two values over here. So I turns to be a sec theta into tan theta upon square root of a square sec square theta minus a square, and here it is d theta. Okay, here I should write d theta as well. So now your I is equal to, taking a common, you can say a square common, and out of this root sign we will be having a with us, and this a cancel with a in the numerator, and we will be left with sec square theta minus 1, that is nothing, simply tan theta. So we are left only with sec theta over here, isn't it? So now you know very well what is the integration of secant theta. Integration of secant theta is log sec theta plus tan theta plus c. But we need to change this theta into x again. So that can be done simply using the result. Log sec theta we have put. A sec theta is x, so the value of sec theta is x upon a. So let us change it over here. It is x upon a. Plus, now tan theta can be written as secant square theta minus 1 and root of it plus c. Let us again substitute the value of sec theta, that is x upon a, log x upon a, plus it is x square upon a square minus 1 and square root of it plus c. So therefore the result that you are getting is log x upon a plus square root of x square minus a square upon a plus c. Again taking this a common, you will be having log 1 upon a into x plus square root of x square minus a square plus c. Now again using properties of log, which is, you can say, log m upon n. We can take this a as a whole upon also. So it can be written as log x plus square root of x square minus a square and minus log a plus c. Now what is log a? Log a is a constant term, so therefore log a is also constant. So therefore this can be written as one new constant, and either we can rename it, or in a simple way we can write it as plus c, because this whole is a constant again. So the final result that we are getting is same as we need to prove over here. Okay, now the next result you can prove yourself. It is very easy. This is dx upon x square plus a square is equal to log x plus square root of x square plus a square. So you need to think that आपको x को क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो x को क्या पुट करने से, कौन सी थी रेशियो पुट करने से आपके पास आइडेंटिटी क्रिएट होगी. मैं नहीं बताऊंगी, यू हैव टू थिंक योरसेल्फ. थोड़ा सा सोचिए, सो दैट कि आपका जो पीछे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन में किया है वो भी एक बार रिकॉल हो जाए. लेट अस टेक 3 more results. These are dx upon x square plus a square, x square minus a square and a square minus x square already we have taken, and this is the third arrangement that we can do in between x square and a square. So before looking at the result of this this identity, let me recall you dx upon 1 plus x square. Do you remember what is the integration of this function?
Yes, it is tan inverse x plus c. So अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो only the change is of one has changed to a square. Okay, so यहाँ पर जो रिजल्ट है that is also having a little change, that is of 1 upon a, and instead of x it is x upon a. Okay, यहाँ पर भी we will use substitution method that we have done in case of substitution by derivative by substitution. Okay, now the next is square root of a square minus x square. इसको भी करने से पहले जस्ट कैन यू थिंक कि कौन सा रिजल्ट रिकॉल करना चाहिए हमें? यस, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए. अगर आपको याद हो तो इट्स इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ओके, तो यहाँ पर अगेन 1 चेंज टू ए स्क्वायर. सो डेरिवेटिव में भी वी आर हैविंग द रेस्पेक्टिव चेंज. सिमिलरली दिस रिजल्ट, यहाँ मुझे मालूम है, मुझे रिकॉल कराने की जरूरत नहीं है. विदाउट रिकॉलिंग यू कैन थिंक कि कैसे कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की है. ये कौन सी यूज की है? साइन इनवर्स सीकेंट इनवर्स एक्स. Secant inverse x का डेरिवेटिव यू नो. आई एम राइटिंग दिस इन रिवर्स ऑर्डर. It is square root of 1 minus x square minus 1. It is x square minus 1 into x outside. So it is also same और change भी बिल्कुल वैसे ही है. So अगर इनके रिजल्ट्स को याद रखना है तो इट इज द बेटर वे टू टेक एज आई हैव टेकन की जो ऊपर की दो हैं उनको इकट्ठा लीजिए क्योंकि उन दोनों का रिजल्ट एक जैसा है. देन मैंने 6th and 7th रिजल्ट्स लिए क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं. देन आई हैव टेकन दीज 3 बिकॉज दीज 3 ऑलरेडी आपने ए स्क्वायर की जगह पर 1 लेकर के यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग. और वैसे भी ये तीनों आर इन द सेम कैटेगरी. Okay, so I hope you can prove these results very easily. Here you will put x as a tan theta, here you will put x as a sin theta, and here I will not tell you, you need to think yourself कि आपको क्या रखना चाहिए. ठीक है, so इन तीनों results को भी आप easily prove कर सकते हैं. Now let us see कि how to use these results in the questions. Here I have taken a very simple example in front of you. I hope आप अपने आप भी कर पाएंगे इसको. Let me name this integrand as I. So I is equal to, you know very well कि क्या करना चाहिए हमें. 9 can be written as 3 square and it is x square dx, and simply it is dx upon a square plus x square. और अभी हमने स्टडी किया है कि a square plus x square को याद करने का the best way to recall dx upon 1 plus x square. Okay, that is tan inverse x को अगर हम रिकॉल कर लें तो ये भी हमें इजीली याद हो जाएगा. एंड इट इज 1 upon a tan inverse x upon a plus c. So this is the simplest way, simplest question you can find out in such type of problems. अब यहाँ पर this may be 9x square, this may be x square minus 9, this may be square root of 9 plus x square, this may be square root of x square plus 9, and means all the 7 results you can create over here to find out that how to calculate these integrations. It is the second problem in front of you. Here just one change I have written. It is, instead of taking coefficient of x square as 1, I have taken here as 4. So you should remember this thing कि when you are going to use the above results, above 7 results, सबके अंदर ही the coefficient of x square must always be 1. हमेशा ये कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. इफ इट इज नॉट 1 देन
the very first step is to make this coefficient as 1 and that can be done easily by taking common. So यहाँ पर आप easily क्या common ले सकते हैं? You can take 4 common. So let me take this as I. So I is equal to integration of 1 upon 2. Taking 4 common means, but out of the under root sign it will be 2 only. So we are left with dx upon square root of x square minus 5 upon 4. Okay. Now being constant, this 1 upon 2 will be out of the integration sign, and now you are left simply with square root of x square minus root 5 upon 2 whole square, which is again one of the result, dx upon x square minus a square. Okay, and you know very well that what is the result of this integral. This is log 1 upon 2. This is 1 upon 2 log x plus square root of x square minus a square, means x square minus 5 upon 4 plus c. Okay, do not leave your answer over here. इसको पूरा आपने simplify करके show करना है by taking LCM. So take LCM over here. It is square root of 4x square minus 5 upon 4 plus c. Under the root sign will be as a whole, which is equal to 1 upon 2 log, taking this 4 out of the root sign, it will be 2, and then taking LCM. So it is 2x plus square root of 4x square minus 5, okay, upon 2. And let me write this upon 2 as log 2 over here, okay, and plus c. Now again, this is a constant as I just explained, 1 upon 2 log 2x plus square root of 4x square minus 5 plus c is the result. You can take this as c1 over here, and finally you can take c over here, or you may continue with c as well. This is immaterial to write in this way. Okay, I hope you understood that how to solve these problems. Now look at this problem. Here you will think कि we were doing only the 7 type of problems, तो लेकिन ये तो उनमें से नजर नहीं आ रही है. But after substitution method that you have done in the previous video, उसके बाद जब ये क्वेश्चन बनेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, so it will be of the same kind of problem that we are discussing in this video. कैसे? See, here it is root x and here it is x cube. A cube is there is no need to worry about this a cube because ये constant है. Cube में हो, power 4 में हो, power 5 में हो, it doesn't affect our result. Only this term should be in square and we should remove this term. अगर ये दोनों change हो जाएं, then this integration will be of the same type. Okay, so here we need to substitute first of all. And what is that substitution? It is x power 3 upon 2. Why we are taking x power 3 upon 2? Because अगर हम यहाँ पर x cube की जगह पर x power 3 upon 2 use करें, so what will happen? Let us put it as t. Okay, so जब x power 3 upon 2 is t, so what is x cube? Clearly it is t square. So अगर हम x power 3 upon 2 को substitute करते हैं, तो we will be able to get square term over here, which is our requirement. And second thing, अब अगर डेरिवेटिव करें हम इस x पावर 3 अपॉन 2 का, तो द डेरिवेटिव विल बी रूट x, बिकॉज x पावर 1 अपॉन 2 विल बी लेफ्ट आफ्टर डिफरेंशिएशन. So as we need to remove this root x, so that will also done. So let us
find derivative of this. This is 3 upon 2 x power 1 upon 2 dx is equal to dt. So it is nothing but clearly root x dx is equal to 2 upon 3 dt. Now just substitute all the values. So I is equal to dt into 2 upon 3. Let me take this 2 upon 3 outside the integration sign, and here we are left with a cube minus t square. Okay, and now the function is ready with you to integrate in the same way as just we have done. Again let me tell you, no need to worry about this a cube, क्योंकि ये constant है. इसको जब आपने पावर स्क्वायर करनी है तो विल टेक a power 3 upon 2 and whole square. It will show you like a square. Okay, so I hope you can simplify this thing, and you should remember which identity is this. Yes, this is sine inverse x upon a, because this is a square minus x square type of the result. So the problem in front of you is again having a little change. देख करके आपको नहीं लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम उन्हीं क्वेश्चंस में से है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं. बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द गोल्डन रूल. इस मेथड को यूज करके हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं. सो द सेम इज ओवर हियर. अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए या पहले किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, ये हमें सोचना होगा. See, so here dx upon cos square x plus 2 sin square x. Okay, something is there in cos square x and sin square x कि अगर हम डिवाइड करें तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो कि एक टर्म दूसरे का डिफरेंशिएशन होगी, एंड दैट इज cos square x और sin square x को अगर हम cos square x से डिवाइड करें तो सर्टेनली यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर tan square x मिलेगा. अब बट व्हेन वी आर डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय cos square x तो हमें न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा. सो अगर न्यूमरेटर में cos square x से डिवाइड करेंगे तो सर्टेनली इट विल बी secant square x, एंड यू नो वेरी वेल कि जो यहाँ tan square x मिलेगा उसमें से tan x को अगर t पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो उसका डेरिवेटिव secant square x हमारे पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी बन चुका है. यस, सो दिस इज द वे टू थिंक. तो कैसे करें इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos square x, और आप ऐसा भी कह सकते हैं टेकिंग cos square x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. दिस यू कैन रिप्रेजेंट इन एनी वे. तो अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करूं, तो लेट मी टेक cos square x as common, तो it will be 1 plus 2 tan square x. Okay, so this cos square x turns to secant square x in the numerator, and in the denominator you are having 1 plus 2 tan square x. Now I hope कि अगर आपने previous exercise की questions की practice कर ली है तो you can easily solve this problem. कैसे? By putting tan x as t. So क्या होगा? secant square x dx changes to dt. So then your I will be converted into dt upon 1 plus 2 t square, and this is what simply क्या करेंगे. नाउ we need to take 2 as common, because again repeat कर रही हूँ मैं अपनी लाइन को कि जो हमने ये 7 रिजल्ट्स ऊपर स्टडी किए हैं उनमें इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर, जो भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर, वाई स्क्वायर, व्हाटसोएवर इज द वेरिएबल ओवर हियर, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, वो इसका कोफिशिएंट 1 बनाना भूल जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो इट्स बेटर टू कीप all these small things in mind so that कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से गलत ना हो. आई होप आप इसको अब आगे फर्दर कर सकते हैं. टेक 1/2 कॉमन, तो ये बन जाएगा dt upon 1/2 plus t square, that is again
tan इनवर्स t की आइडेंटिटी बन जाएगी विच इज 1/a tan इनवर्स x/a. ओके, नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. यहां हम सोचना शुरू करें कि जो नंबर 1 रूल है हमारा कि इफ इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन डायरेक्टली तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. सेकेंड, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें तो भी फिजिबल नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग x पावर 4 प्लस सी और x पावर 4 का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 4x क्यूब. x क्यूब इज इन वन ऑफ द टर्म विच इज इन द न्यूमरेटर बट दूसरी टर्म में पावर ओनली 1 है x की. सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो वी कांट डू. तो क्या करना चाहिए? एक और ऑप्शन कि इज इट पॉसिबल टू डिवाइड, वो भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर. तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज द मोस्ट फिजिबल वे यू आर थिंकिंग अबाउट? आई होप आपने सोच लिया होगा. वो है सेग्रीगेटिंग, कि अगर सेग्रीगेट करें इन दोनों को ax क्यूब अपॉन द डिनोमिनेटर, सो देखिए x पावर 4 का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा. एंड सेकेंड टर्म dx अपॉन x पावर 4 प्लस c में अभी आई एम नॉट टेलिंग यू, पहले मैं एक ही टर्म लिख लूं. टिल देन आप सोचिए कि क्या करना चाहिए. सो लेट मी राइट इट बाय सेग्रीगेटिंग द न्यूमरेटर. सो इट इज फर्स्ट टर्म विल बी ax क्यूब अपॉन x power 4 plus c plus dx upon x power 4 plus c dx. Okay, so let me name these as I1 and I2. बेटर होगा अगर आप इस तरह से I1 I2 लेकर कर लें, बिकॉज अदरवाइज वो रिजल्ट इतना बड़ा हो जाता है, शीट्स यहाँ छोटी रह जाती है और हम उसी में छोटा छोटा लिखते हैं तो दैट इज नॉट रीडेबल बाय द एग्जामिनर और समटाइम्स एग्जामिनर को नहीं समझ आने की वजह से यू मे लूज योर मार्क्स. तो बेटर है बहुत अपने क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें. और आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी भी नहीं है तो मैथ्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. मेरी भी हैंडराइटिंग इज नॉट सो गुड, बट मैथ्स में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा स्पेस दे करके लिखना है सो दैट कि ईच एंड एवरी टर्म रिमेन क्लियर टू द एग्जामिनर. ओके, सो इसलिए हमने इन दोनों का नाम दिया I1 एंड I2 और इनको सेग्रीगेट करके इनको अलग अलग सिंप्लीफाई करके देन वी कंबाइन टुगेदर. सो अब सबसे पहले हम I1 को सोल्व करें. सो I1 अभी मैंने आपको बताया है इट इज ax क्यूब अपॉन x पावर 4 प्लस c dx. सो जस्ट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट. सो लेट x पावर 4 प्लस c as t. So clearly 4x cube dx is equal to dt. Put करें, a is a constant term so will be out and this x cube dx will be 1 upon 4 dt. dt upon 4. So let us put the values over here. So I1 is equal to a upon 4 dt upon t only. Okay, and it is simply log t. A upon 4 log t plus c1. Let me name this constant. So we are having a upon 4 log x power 4 plus c plus c1. So this is the integration of first part. Now let us take the second part, that is I2. I2 we are having with us as integration of, let me check it, what is it, bx upon x power 4 plus c. bx upon x power 4 plus c dx. Yes, I will think कि क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बट थोड़ा सा पैटर्न हमारा सब्स्टिट्यूट का चेंज होगा. वो क्या होगा, ऊपर x है, सो x पावर 4 को टी पुट करने की बजाय में किसको करना चाहिए, x स्क्वायर को, सो दैट कि ऊपर जो x है वो हमारे पास डेरिवेटिव में वेनिश हो जाए. सो
हियर यू शुड बी केयरफुल कि अब एक्स स्क्वायर प्लस सी को नहीं रखना है, बिकॉज सी कैन बी टेकन विद एक्स पावर 4. हम वी आर टेकिंग हियर एक्स स्क्वायर, so x square plus c we will not take, will take only x square over here, because ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें sometimes हम इग्नोर कर देते हैं, and this become the reason that to make a question wrong. So let us suppose that x square is equal to t, so clearly 2x dx will be equal to dt. So what is x dx? It is dt upon 2. So as b is the constant, so b will be outside the integration sign as well as this upon 2. So your I2 changes to b upon 2 into dt upon t square plus c. Okay, now what is t square plus c? Yes, it is nothing but simply 1 upon a tan inverse t upon a means root c over here. So it is equal to b upon 2 into 1 upon root c. 1 upon a means root c over here. Tan inverse t upon root c plus, let me name it as c2 over here. Okay, so we are having b upon 2 root c tan inverse t is x square upon root c plus c2. Now combine the two results, I1 and I2, and that will be the final result with you. That is the integration of the given problem. So integration is not tough, but only the need is to be regular. Regularly you need to do the practice of these questions. अगर आप daily 15 to 20 questions practice कर रहे हैं integration में, so integration will be the easiest chapter for you. और बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर, बिकॉज अभी इसका हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे उसमें भी ये जो रूल आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के स्टडी कर रहे हैं वही आप यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में. So this chapter is going to be very scoring in board exam as well as in JEE exams. तो इसलिए और इवन NDA एग्जाम्स में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है. So इसलिए prepare it very well, keep learning and stay tuned.